However, my introduction was given as an influencer. I don't know how much do I influence people directly, but I do influence mental health of this capital state of the country because I work with the Minister of Health, and I would want you to question what government is doing about mental health, and I'm ready to get vulnerable as it requires because I'm doing my bit, and I would probably be willing to answer all your questions concerning that. But yes, we as a community do lack skills of what civil society usually has. So we don't question government. We don't really ask government what government is doing about mental well-being, right? Be it preventive, promotive or curative. एक अभी नायाब ने इतना माहौल बना दिया तो मुझे मैंने 2 साल पहले 2 लाइनें लिखी थी, मुझे लगा मैं भी वहीं से शुरू करूंगा कि ऐ दिल चल आज मेरे साथ कहीं दूर गैरों की महफिल की ओर चला जाए। ऐ दिल चल आज मेरे साथ कहीं दूर गैरों की महफिल की ओर चला जाए, अपनों से तो कहीं मुहब्बत है बाकी, अपनों से तो कहीं मुहब्बत है बाकी, एहसास दर्द किसी और से ही बांटा है, एहसास दर्द किसी और से ही बांटा है। और हमें पता है कि देश में साइकेट्रिस्ट की जो संख्या है 1 लाख के ऊपर 0.2, यानी एक इंसान भी पूरा नहीं है 1 लाख के ऊपर। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 4 लाख लोगों के ऊपर 5 लाख लोगों के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट है और लगभग 3.5 लाख लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट है इस देश में। जबकि ग्लोबल यदि मीडियन निकाला जाए तो हर लाख के ऊपर 3 साइकेट्रिस्ट तो अवेलेबल हैं। तो आप सोचिए कि हम दुनिया से भी लगभग 9वां हिस्सा पीछे चल रहे हैं, यानी हम 9 गुना पीछे हैं दुनिया से। और यदि मैं उसमें मर्दों की बात करूं, जो कि इस रूम में किस्मत है कि हम 2 लोग यहाँ हैं, पर इस रूम में यदि आप देखोगे, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बेहतर बता पाएगी कि कितने मेल रजिस्ट्रेशन हुए और कितने फीमेल। मैं उन मेल की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको स्कूल से भेजा गया है ज़बरदस्ती कि जाओ अटेंड करो, जो अपनी विलिंगनेस से आए हैं। एंड आई कैन ओनली सी फ्यू फेसेस, शायद 15 या 20। तो अब मेल के ऊपर कितने मेल साइकोलॉजिस्ट हैं इसकी तो गणित बिगाड़ कर देगी। तो मेल मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत कम बात होती है, एंड मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब उस पर कुछ प्रकाश डालें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ आपके क्वेश्चंस को लेने के लिए हैं मौजूद। और नायाब ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि अरे यार इतना सरगम आ गई, ताल आ गई, रिदम आ गई, अभी कहाँ बोरिंग सा सेशन होगा। तो हम इस सेशन को इंटरेक्टिव रखें और इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा हमें आपका दोस्त समझें, हमसे बात करें। हम लोग चाहते हैं आपसे मिलने आए, बात करने आए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर विशाल, मैं यहाँ पे नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर पर ऑल्सो मैं दिल्ली साइकेट्रिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ राइट नाउ। साइकेट्रिस्ट आर स्टिग्मेटाइज्ड, साइकेट्री तो स्टिग्मेटाइज है ही, मेंटल हेल्थ भी स्टिग्मेटाइज है, बट साइकेट्रिस्ट ऑल्सो वेरी स्टिग्मेटाइज पॉपुलेशन अमंग द डॉक्टर्स इटसेल्फ। साइकेट्री मुश्किल से 15 दिन पढ़ाई जाती है थ्रू आउट MBBS ऑफ 4.5 years. So that's why a general physician or general doctor who gets out hardly has any idea of what are psychiatric disorders. और जो bias आप देखते हो जनरल पब्लिक में, that same similar bias you also see in doctors also. And they also afraid, जैसे कि किसी पेशेंट को पता है clearly कि पेशेंट is having a psychological problem, वो भेजते नहीं है ये सोच के कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे पागलों के डॉक्टर के पास भेज रहे हो कि मैं पागल थोड़ा ना, मैं तो आपका फिजिशियन पेशेंट है। सो वी कंटिन्यू टू सी दिस काइंड ऑफ स्टिग्मा। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है लास्ट 3-4 years में, कोविड। ना कोविड इज बिन अ गेम चेंजर फॉर साइकेट्री। गाइडलाइंस केम इनटू इफेक्ट ऑन 30th March 2022, विद इन 10 days। वो वैसे ही बन रही थी, एंड बिकॉज साइकेट्री समथिंग यू कैन गो ऑनलाइन एंड शो द डॉक्टर, इट क्रिएटेड अ बूम। एंड व्हेन पीपल लिव्ड इन देयर ओन होम्स एंड दे कुड नॉट फाइंड डिस्ट्रैक्शन कि अल्कोहल ले लेते हैं या मूवीज़ चले जाते हैं या हॉलीडे कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे रहना पड़ रहा है सारे दिन, बच्चों को माँ बाप के साथ रहना पड़ रहा है सारे दिन। सो यू सॉ लॉट मोर कॉम्प्लिकेशंस। आपको दिख रहा है आपके माँ बाप में डिमेंशिया आ रहा है,
आपको दिख रहा है आपकी वाइफ चिड़चिड़ी है, आपको दिख रहा है आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज यू आर एट होम फॉर ऑल दैट टाइम. And I think that's where mental health get all the boom during the COVID period. And that's where I started my so-called influencer journey. हम खाली थे, तो हमने कहा चलो Instagram नया नया सीखा है वो ट्राई करते हैं. And we started talking and interacting. And a lot of people came in, they would have questions. And this is, I think, it came into me to do this kind of thing. I'm not a big influencer at all. ये दोनों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई जानता भी नहीं, which is fine with me. I'm happy with my patients. But this medium has been very nice. And youngsters, kudos to youngsters. Who called me today? Sanya. Sanya is one of the mental health advocates who I did a lot of shows with, and she influenced me. She told me to come here. It's an important thing. Otherwise, you don't see psychiatrists coming here. मतलब mental health foundation है, but you don't see psychiatrists coming here. So this is because it's not been promoted that way. I was talking to Dr. Nand कि हमें इसको promote करना चाहिए. We should also come and be part of this dialogue. It should not be a dialogue between people and people. It should dialogue also between us and people so that we understand कि उनकी क्या needs हैं. You know, this is important. And हम कहाँ पे help कर सकते हैं, हम कहाँ understand कर सकते हैं basic needs को. एक और important चीज़ बताना चाहूँगा, young psychologists जो बन रहे हैं, when I was doing psychiatry, हमारा जो ICD-10 DSM-5 है, so I used to be very proud of labeling people. कि मैंने ये डायग्नोज भी कर दिया, अरे मैंने तो इसको डबल डिप्रेशन कर दिया, मैंने इसको तो पर्सनालिटी भी कर दिया, मैंने इसको ये प्रॉब्लम भी ढूंढ ली. एंड द मोर डायग्नोसिस आई मेक फॉर दिस पेशेंट, द स्मार्टर डॉक्टर आई एम. Now over years, now 23 years of my journey of psychiatry, I have realized it's not good to label people. So I don't label my patients at all. I look at their symptoms and try to help them become functional. The whole point of mental health is to make people functional. I could be totally psychotic, but if I'm here talking to all of you nicely, I'm able to do my duty as a doctor, as a spouse, as a clinician. I think that's fine. So it's important to make people functional rather than labeling them, putting them in silos and saying iska kuch nahi ho sakta, iska kuch nahi ho sakta. I think this is very important. We need to spread this message also. Thank you. Our first question is, what led you to develop yourself as an influencer? And is your profession in sync with the goal of self-love? Whichever one of you wants to answer may do so. Yeah, so I always wanted to be a psychiatrist Right. or a computer specialist because I knew 21st century of mind. If you look at the history, as any civilization progresses, your basic needs start getting met, physical security burns much more. So what is left is mind. अब माइंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑर्गन है, ये इसको ब्रेन बोले. एक्चुअली ये भी कन्फ्यूजन है कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है. इफ़ यू रियली लुक इनटू दिस डिबेट, ब्रेन तो हमें स्ट्रक्चर पता है, बट माइंड एग्जैक्टली क्या है. वेद माइंड को कुछ और कहते हैं, आयुर्वेद का कुछ और सिस्टम है, स्पिरिचुअल मतलब एवरीथिंग हैव डिफरेंट वेज ऑफ व्हाट हाउ डू डिफाइन माइंड. स्टिल वी नॉट श्योर माइंड कहाँ पे रहता है, क्या है. बट आई न्यू दैट एज वी प्रोग्रेस, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो, एज वी प्रोग्रेस एंड आवर बेसिक नीड्स आर मेट, तो हमारा माइंड तो खाली है. एंड माइंड हैज टेंडेंसी टू बी नेगेटिव. इफ यू सिट अलोन विद योर माइंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट. 5 मिनट नहीं बैठ पाते, इसलिए लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, प्राणायाम करना मुश्किल लगता है. इट्स ईजियर टू गो टू जिम विद लॉट ऑफ लाउड नॉइज और ईजियर टू वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम देन टू सिट ऑन योर ओन. And so I did this because I love psychiatry and I love talking and sharing with people. And I think this is why I joined psychiatry. And as an influencer, I can go on anytime and talk to people without any barriers. I think this is very, very revolutionizing, and that's I'm glad and happy to do this. A lot of people in the audience want to know what your journey has been like from an actress to now a very active mental health advocate. Well, like I said, that acting is still very much my day job, and much like any human who had to go through COVID, I too had my own struggle. I'm sure you all know, if you guys follow people, you know their careers. While the acting profession or the entertainment business is extremely captivating and very, very aspirational, it's probably one of the most unstable jobs that a person can have. And
you have to be a little unhinged. I don't want to put a negative thought on it, but knowing that I am willfully choosing a job that gives me no sense of security, no sense of, I can't tell you if I'm going to be working tomorrow. I have no clue. There's no way of me to verify that or to confirm it for myself. But yet, I choose every day to be on a revolving, unsteady plate. So clearly, there must be something off that I'm choosing it day in and day out. But hence, they say that artists are slightly off, and I take pride in it. But again, this is all very poetic. To talk as a regular, functioning human being, the fact that you are in a job that is so unsteady brings with it a lot of mental trauma. And to be able to, like Doctor just said, that our mind is wired to just constantly suss out fear and give us negative thought processes and rumination that, oh my God, what if I don't have a job tomorrow? What am I going to do? How will I survive? And I've gone through this cycle now for almost 22 years. So for 22 years, I have lived the job of an actor where I don't know if I'm going to be working tomorrow. And over a period of time, I realized that I have to find a way to be able to get a grip on my life being a certain way. And the only way that that can happen is if I do a little bit of self-inquiry. And it is the hardest thing to do, to sit with yourself and say, okay, now I'm going to meet myself. I'm going to meet her with all her pluses and all her minuses, and to accept them and to embrace them and say, okay, what can I do to change something that will make my life a little easier for me? And that is what really set me off on a journey. During COVID, I went through a very, very severe slump because I obviously knew that actors were told, अब आप लोग सब घर पे बैठिए, आपकी ज़रूरत किसी को नहीं है. Frontline workers will be out there. We don't know when we're going to open the industry again. And everything that I had ever lived with for 20 odd years got compounded in those 2 years. And I realized that there could very well be a possibility that I may never leave my house again. I will never face a camera again. And the world will go on just as it is going. So I realized that I didn't really have that kind of purpose. And of course, it was all rumination. It was something in my mind because the arts are the things that have saved people from the deepest trenches of mental trauma. And this I know because I went on to study arts-based therapy. I now have a postgraduate diploma in arts-based therapy, and I realize how much it can help people who have difficulty with talk therapy or with people who have a hard time expressing themselves. So only when I sat with myself and accepted the reality of what my life was during COVID was I able to do something to bring about some change. And I remember crying to my daughter who was very young, and she was like, Mama, why are you looking so sad? And I said, you know, I don't know if I'm ever going to have work again. And because she doesn't have a mind that is corrupted by the ego, she just said, so why can't you make your own work? And I was like, that is such a simple solution. Why can't I make my own work? And I decided to go back to formal education. And I did a course in psychology, as in not psychology, but in counseling. I did a course in Buddhist psychology. I moved on to do a postgraduate diploma in arts-based therapy, and I just came back after finishing a teacher's training course in mindfulness meditation. So I just made my own work. And funnily enough, I was leaving this morning and I told her that I'm going for a mental health festival for the first time, and my bio doesn't say actor. So I've managed to actually change my work, and that was because of her. And that's why I'm here today. So thank you. So how can we validate, or what is the validity of information that is coming to us, and how can we sort of verify that whatever we see on Instagram is not just psychology facts? And well, honestly, like Doctor just said, that, you know, he's not that big an influencer, but he's a doctor. I think that is what's important, right?
all of us have struggles, and of course, it's great. I think it's amazing that we are able to share, because that really makes the burden a little lighter. क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हम ही तड़प रहे हैं, but like we realize Indian families were all dysfunctional. तो सब खुश हो जाते हैं. अरे वाह, तुम्हें भी यही problem है. So it's nice to know that okay, I'm not suffering alone, and this could be a universal problem happening in different circumstances, but that does not give me the validity to start treating people. I think that is a huge disservice. If anybody is doing it on Instagram without having the right qualification, then I think we're in for a lot of trouble. We can definitely follow people who are extending their skills from beyond a clinic to a telephone or a phone screen to make themselves accessible and help and add a little more benefit to their skills. But I would at no point think that I have the same kind of skills that a trained psychiatrist has. So as an influencer, please, if you are feeling any sort of severe mental affliction, please seek out someone who has the right qualification to guide you. Please don't follow influencers on Instagram. They are not therapists, they are not psychologists. And just because I have found a way to get around a certain trouble a certain way, it's not a one-size-fits-all, right? So we all have a different mental makeup, we all have different circumstances, and when you sit across the table or across a screen with a qualified therapist, psychiatrist, psychologist, they've spent their lives learning more and more deeply about various different circumstances to guide you correctly. So I don't think there is anything as influencers in the mental health space, and they should not be followed. Please go to a psychiatrist or a doctor or somebody who has spent his life actually studying the skill and now is offering his services so that it's becoming more accessible to those who at this point may not be able to seek out professional help. So a huge amount of gratitude to you, sir, for doing this. Thank you. Thank you. And for putting yourself out there. I know that, it's a paid job, but you're giving yourself out there as a way of serving humanity. But he's not doing it carelessly. So I don't think we should even equate ourselves as influencers with trained doctors. I would also like to add, so एक कहावत है ना कि don't judge a book by its cover. Don't judge a Insta page through its followers. But don't judge Instagram at all. It's all lies. Exactly. Most of it is lies. It's है ना? curated. आपको entertainment चाहिए तो शरारत देखो एक बार फिर से. बिल्कुल. Please, हमने मेहनत करके शो बनाया है. Entertainment के लिए Instagram नहीं है, और Instagram है भी तो Instagram पे वो इधर उंगली करे तो 4 नुस्खे आ जाएं और इधर उंगली करे तो 4 नुस्खे आ जाएं, वो तरीका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत लंबा नहीं चलेगा. और इसमें है ना, डिमांड और सप्लाई को समझना पड़ेगा. सो सप्लाई क्योंकि कम है, डिमांड ज़्यादा है जी, तो ऐरा गहरा नत्थु खेरा कोई भी कुछ भी कहे, उसको पूरी जानकारी है कि नहीं है, जजमेंट हमारे पास होनी चाहिए. और जब मैं बोलता हूँ कि फॉलोअर्स से मत जज करिए, तो उसकी भाव भंगिमाओं से भी मत जज करिए. हो सकता है कि उसके अंदर एक अच्छा ऑरेटर हो, एक अच्छा बोलने वाला हो, एक अच्छा एक्टर हो, लेकिन उसके अंदर हो सकता है कि एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट ना हो. साइकोथेरेपी के लिए सही लोगों की पहचान करिए और समझिए कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एमफिल का मतलब क्या है, आर्ट बेस्ड थेरेपी का मतलब क्या है, नैरेटिव थेरेपी का क्या है, और साइकेट्रिस्ट का क्या रोल है. और साथ साथ एक सलाह, क्योंकि साइकेट्री भी बहुत पेचीदा हो चुकी है. अब मैं जानता हूँ कि एमबीबीएस में तो बहुत कम लोग हैं, डॉक्टर साहब एग्री करें कि 15 दिन की वो इंटर्नशिप 70% लोग तो अटेंड नहीं करते, भागते हैं सेक्रेटरी से. एंड क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के 38 हॉस्पिटल्स हैं और उसमें 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, और मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्नशिप बहुत लोग चाहते हैं करना, लेकिन सेक्रेटरी से सब भागते हैं. यदि 15 दिन स्किप करने हैं तो लेबर रूम में बिताने को तैयार हैं, लेकिन सेक्रेटरी से भागते हैं. पर्पज़ ये है कहने का कि साइकेट्रिस्ट में भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की और साइकोथेरेपिस्ट की अप्रोच अब धीरे धीरे बदल रही है. अभी तक हम सिर्फ ये समझते थे कि कुछ एक किताब है केमिकल खिचड़ी, पढ़िएगा, अच्छी किताब है, अमृता त्रिपाठी की लिखी हुई.
कि हर सब कुछ जो है हमारे दिमाग के केमिकल्स हैं। तो यदि सिर्फ इस अप्रोच से काम करेंगे तो हम बहुत हद तक इमोशंस को और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी है समझना एक साइकेट्रिस्ट के लिए भी। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, धीरे धीरे साइकेट्रिस्ट भी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। कुडोज टू डॉक्टर साहब एंड पीपल। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो राठी जी को देख रहा हूँ मैं, तो कुछ लोग हैं जो साइकेट्री को समझ रहे हैं और पहुँच रहे हैं लोगों तक। अभी तक अभिभास की भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लाइफ साइंसेज, यू मस्ट बी नोइंग। उसकी अप्रोच बहुत हद तक बदली है। ये अप्रोच बदलने की ज़रूरत है और डिमांड सप्लाई में दोनों को समझदार होने की ज़रूरत है और दोनों को समझने की ज़रूरत है कि सही और गलत में फ़र्क कैसे किया जाए। थैंक यू। Very basic, even for other things also in life, in news you hear, in social media. So also you should always check and verify. और कोई भी चीज़ फैंटास्टिकल आपको दिखे, कोई भी आपको 100% गारंटी ट्रीटमेंट देता है, तो ऑब्वियसली वो फ्रॉड ही है। I mean, there's no 100% guarantee in life, you know. So 100% guarantee जहाँ आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है या आपको बहुत फैंटास्टिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ये मैजिकल चीज़ है, मैजिकल पिल है, मैजिक है, I think this all doesn't work. And just to add to that, again, brain is really, really complex. Just to put it perspective here for everyone. See the amount of neuronal connections in a human brain. Single human brain की बात कर रहा हूँ. Is more than the number of stars in the known universe. सिंगल ह्यूमन ब्रेन की बात हो रही है, तो उसको आप बोलो जी हम समझ में आ गया, अभी नहीं समझ में आया। सो पहले हम सोचते थे इट्स ऑल फैमिली इश्यूज, फैमिली की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, फैमिली की वजह से डिप्रेशन हो गया, फिर नहीं ये सोशल फैक्टर्स की वजह से हुआ, इमिग्रेशन की वजह से या पॉवर्टी की वजह से, नहीं अब सोच रहे थे केमिकल्स की वजह से हो रहा है, नहीं, इट्स गोइंग इवन फर्दर एंड इट इज अ लॉन्ग जर्नी, वी आर लर्निंग ऑन द वे। So just to put that in perspective, it's really complex and do not ever, just like बोथों ने बहुत अच्छे से बोला, आप देख लो जो लोग बाकी बातें कर रहे हैं, it's good to spread the message of mental health, but to say कि यही ट्रीटमेंट है या ऐसे ही डायग्नोज कर लो अपने आप एक सेल्फ असेसमेंट्स करके, वो सब मत करो। आई थिंक that's very dangerous what people do. सर वो एज यू सेड कि मतलब कि इंस्टाग्राम में लॉट ऑफ इनफैक्ट नो फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज ना वो कमिंग अप like we have now regulatory now authorities in now telecom, in banking, insurance. Can't we have a regulatory authority here also? So there is a authority, भारत सरकार ने एक अथॉरिटी सेट की है। जैसे RCI रेगुलेट करती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, एक लाइसेंस देती है, इसी तरीके से एक अथॉरिटी अभी बनने में है। उसका एक्ट 2021 में इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर पास हो चुका था। अलाइड सर्विसेज सारी कवर होंगी उसमें, और उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कवर होंगे, फिजिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं जो सब जगह से कवर नहीं है। जैसे आप एक नर्स का डिप्लोमा कर लेते हैं या एक ANM करते हैं, GNM करते हैं, PHNO बनते हैं, उसके बाद भी आपको लाइसेंस दिया जाएगा, एक अथॉरिटी दी जाएगी कि आप प्रैक्टिस कर सकें, और उसमें साइकोलॉजिस्ट कवर होंगे। उसका एक एक्ट बनने के बाद रूल्स बनते हैं, और रूल बनने के बाद फिर उसको सरकारें अडॉप्ट करती हैं। इसके रूल्स कहीं पे फंसे थे 1-1.5 साल से। भारत सरकार जैसे ही उसको भेजेगी, सारे राज्य उसको अडॉप्ट करेंगे, एंड तब बहुत जल्दी सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स उसमें कवर होंगे। नहीं, I'm talking of now Instagram. He is talking about how to verify the information. Do you have any, like you know, जैसे IRDA वाले रोकते हैं कि आप false information do दो। you have a in fact now वो filter We down don't have that. अभी तो कोई ऐसा नहीं है साहब, अभी तो freedom of सेल्फ speech चेक है। पे चल रहा है अभी। क्योंकि as you rightly said कि it is doing no more harm than doing no good. तो something should be done seriously about it. सर ये जब तक आपके पास फ्री मार्केट है तो थोड़ा बहुत फ्रॉड तो हमेशा ही रहेगा। So all we have to do is make people more aware, and that's what we are doing through this medium, and it's important to do that. But ये हमेशा बात सच है लाइफ में, कोई भी चीज़ बहुत चमकती हुई हो तो सोना नहीं होती है मोस्ट लाइकली। और सोशल मीडिया ना एल्गोरिथम समझता है, वो ज्ञान नहीं समझता, सही गलत नहीं समझता। और अभी आप देखोगे कि ट्विटर जो अब एक्स है, उसकी एल्गोरिथम चेंज हो गई। अभी आप उनको पैसा दे के वेरीफाई नहीं कराओगे तो आपके ट्वीट्स के जो रीट्वीट आते थे, अब रीपोस्ट आते हैं, वो नहीं आएंगे। यूट्यूब की अपनी गणित है ना। इंडिया में यूट्यूब की गणित अलग है और इंडिया से बाहर अलग है। इंडिया पे बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर बन गए जिनकी बातें क्रिंज है, मिसोजिनिस्ट कमेंट करके भी लोग, आपने देखा OTT तक पहुंच गए, और आप जानते हो मैं किनकी बात कर रहा हूँ, पहुंच गए, और उनका बोलबाला है। Also, please understand that Instagram is a full-time business now, right? So if I'm choosing to be an influencer, then I'm giving up everything else and just influencing. I don't have time to go study. साम दाम दंड भेद कैसे भी बिल्कुल। करके मुझे So, and especially for those, and I speak largely for myself, I'm from a generation that did on-ground work.
right? We put our feet on the ground, got our hands dirty, and that's how we know how to function. While I understand that the landscape is changing, and of course one has to change with the landscape, otherwise you perish or die. The point is also, do I want to, I'm saying, you know, for a practicing psychologist, psychiatrist who has a healthy practice going, they have to make a difficult choice between, do I let go of patients who I meet and interface personally, as opposed to trying to reach out to an audience that is on a screen. Now that's a choice that they have to make. What choice they make is entirely up to them, whatever serves them well, whatever they feel they serve better. I may feel I'm having more impact on the ground, I don't want to talk to a screen, right? So in that case, I'm going to run the risk. It's not incumbent on the trained psychologists and the psychiatrists to be available online. It is incumbent on the guys online to go out there and study their skills and then come back online. So we can't hold the medical fraternity responsible saying, आप लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए दूसरे लोग चूना लगा रहे हैं. वो उनकी problem है. It's the problem of their ethics. And as someone who decided that I wanted to back myself with my skills before going out there, of course I want to use my influence. I want to use it well. I want to impact people on the ground. If I have built a brand of myself for the last 20 years, and I know that I bring a certain amount of credibility, and people will be willing to listen to me, it is my responsibility ethically to make sure that I give information that is verified, that is qualified, and that is responsible. It's on me. It's not on the doctor. I can't say क्योंकि वो gap fill नहीं कर रहे हैं तो मैं जाकर लोगों को उल्लू बनाऊं, right? So I feel it is incumbent on all the influencers out there who have made Instagram a job, and great, kudos to them. I think it's amazing that a system is there that has made things so accessible and democratized it, but it has also led to gross irresponsibility. And that is something that needs to constantly be drilled into the head of someone who's out there saying, आप ये खरीद लो, आप वो बेच लो, आप यहाँ चले जाओ. You have to, the fact that now there are systems where you have to say that this is a paid post or this is a paid collaboration or it is an ad, so that the person who's following you knows that this is a review that is probably colored. So the same thing goes for any other information. If tomorrow I want to be a physical trainer, I have to have basic knowledge about human anatomy, right? I need to understand how an injury could happen. I can't tell someone to lift weights if they have a shoulder injury. So similarly, if I am out there dispensing mental health advice, I have to make sure that somewhere I put a disclaimer saying this is a personal anecdote. This is not someone who has a mental health background in terms of their qualification. If you feel that you have very severe symptoms or you are not being able to understand what's going on, please seek professional help. That needs to be mentioned. I'm not a professional. As an influencer, I'm speaking for people who are out there being life coaches. Now the thing is that we live in a country where we hail God men. Okay, that's just who we are as people. We are happy to believe anyone who will give us a quick fix. Obviously all of us want it, right? And हम में है कि अच्छा भाई आपके फैमिली के एक बाबा जी हैं या आपकी फैमिली में कोई ये हैं जो फैमिली के बारे में बताते रहते हैं, तो मैं तो बहुत खुशी खुशी किसी को मान लूँगी जो इन्फ्लुएंसर हैं. I don't look for verification, but it has to become incumbent on people saying you are doing something unethical. It is having real life consequence. किसी को चोट लग सकती है. आप अपना बता रहे हैं, हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ था, फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया. आपको तो डिप्रेशन का पता भी नहीं है. And you have to understand, a little sadness is not depression. Having a little bit of rumination is not depression. You have to understand terms that are being peddled have actual weight, right? So you don't just throw them around, and like doctor said, that this labeling business has to stop. सब उसका सहारा लेकर, अरे अब तो मुझे ADHD है, तो अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी. क्यों भाई? If you think you have ADHD, go to a professional who will tell you how to circumvent it. You don't carry it as now it's become a fad. Oh, you know, I'm high functioning anxiety. What do you mean high functioning anxiety? It's problematic, boss. Right? But we've made it such, and it has come about because of Instagram, where everything is now a trigger. Why are we throwing these words around and making them regular parlance? Because then people who actually have... This is so toxic. Everything is so toxic.
Yes, and I feel that the people who actually, like Doctor said, have a problem with daily functioning are suddenly being reduced, and their trauma, again another catchphrase, I don't want to use that word, but their trauma is being seriously diluted because अब सबको trauma है, अब तो सबके triggers हैं. नहीं भाई, you don't use such, it's not prose, right? Trauma bonding, if I would say. Sorry? Everybody's trauma bonding these days. Yes, trauma bonding. Oh my God, like now we have trauma bonding parties. ये सब क्या हो रहा है? I do hear you, and thank you for sharing that. So, on a very, closing very, note, yeah. just more. So, जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें बच्चों के साथ शुरू करने की जरूरत है. आई होप ऑल ऑफ यू आर एम्बेसडर्स. मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स हो कि नहीं? हाथ उठाओ. हाँ. Well, everyone should be a mental health ambassador here. सब हाथ उठाओ भाई. तो स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं आपके स्कूल में? काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं? गुड. तो हम लोग दिल्ली सरकार में 20 स्कूल्स में हमने अभी साइकोलॉजिस्ट रखे हैं जो लाइफ स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं. वी आर मेकिंग आवर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड बायोलॉजिकल सिम्टम्स. बेसिक से शुरुआत करने की जरूरत है. उन्हें लाइफ स्किल्स बताने की जरूरत है कि सेल्फ इंक्वायरी है क्या, सेल्फ अवेयरनेस है क्या. पहले बात शुरुआत करो. हमें बात करनी पड़ेगी. हमें ये स्ट्रेस लेना, अरे मैं एक बात करूंगी तो मेरे साथ ऐसा हो गया तो उसके पेरेंट्स तो ये, हमें नहीं कर लेंगे सब कुछ बियर, फेलियर होगा ना. बात करो. यदि कोई बच्चा स्ट्रेस में है उससे बात करो. आप लोग शुरू करोगे क्योंकि जितना बड़े होते जाएंगे ना हमारी ईगो बड़ी होती जाती है. आप लोग शुरू करो, घर में सबको बोलो और हम लोग भी जितना हो सके बात करने की कोशिश करें. लेट्स टॉक अबाउट वेल बीइंग, है ना. दैट्स हाउ वी स्टार्ट.